Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today I posted two comments, screenshots on my videos about their success in more than one post. And they are telling that I will opt for this or I will opt for this. This has triggered a series of comments on those two comments that is placed in community. So based on those comments, I am making this video so that you should have a holistic view of real world. Now, what type of job you should opt for? This is one question that is haunting the mind of everyone. When we are in job market, this question troubles us. Should I go for banking? Should I go for SSC? Should I go for other departments? Should I go for this and that? Some people they try to compare the jobs between one job and another, and somebody will say you should not go to this sector, this is very hectic, this is that. Now one thing we have to be very clear, in country like India we are not choosers. In country like India, no one, or you can say most of the people, are not choosers of their job. Why? Because jobs are limited and the people aspiring for these jobs are in very large number. So sometime you pursue your education in one particular field. By the time you complete your education, you find there is no taker for you. And this is becoming more evident in the field of engineering or even the BDS or B.Ed or some other qualifications, where person has lot of aspirations, but by the time he or she completes the course, there are no takers. Even if there are takers, they are offering very less salaries to them, and these people are compelled to look for alternate job opportunities. And out of job opportunities in India, people look for SSC, people look for banking, people look for EPFO, FCI, or any other department, maybe RBI, maybe any other thing. Why this happens? Because the job in your field is not available. So you have to move to some other field which can give you job. Now some people they engage in discussion, don't come to this sector, don't go to that sector, don't go to that sector, but they are working in that sector. Today also I read one comment, one fellow said, sir, one of my friend, although that English is wrong, but anyhow he wrote like this. He is working in some bank, now he is manager, he is saying don't come to banking. My simple question is, if banking is so bad and you are working as manager and preaching others, why don't you leave the job and give this job to some needy person? What is the compulsion? Why you are still pursuing in the field that is not of your liking? The reason is obvious. You are not getting the job in your beloved field. So you are going for second love. And second love is banking. Instead of appreciating the banking, which is helping you to earn 2 times bread, you are advising others not to come in the field. So this is sometimes creates wrong impression about a sector, whereas the true picture may be different. Say lakhs of people are working in any field. All are not happy. Some are happy, some are unhappy, some get their posting according to their choice, others may not get posting according to their choice. And that may be reflected in their views. But somebody views cannot be view of the entire sector. So my advice is, if you are looking for a job, based on your capabilities, you should apply for the fields where you can crack the examination. And after cracking the examination, then you can decide which field is good for you.
For someone, SSC may be good. For someone, banking may be good. For someone, some other field may be good. So no single sector can absorb all the people in this country. So every sector will coexist. There will be people, those are getting job in banking. There will be people, those will be getting job through SSC. There will be job, those are getting through UPSC. There may be people, those are getting job in cooperative sector. There may be people, those are getting job through state government boards or other public sector organization. So instead of comparing one job with another, at this stage when you are not having even a single offer in hand, I think it is just wastage of time. This discussion should start at a stage when you have already selected for more than one post. And the moment you are selected for more than one post, then you decide which organization to join depending upon your temperament, your liking, and what you need from the job. Because each person requirement may be different. Some people may like to work as PN throughout the life. Some people may like to work as a clerk throughout the life. But there may be some people those want to rise in life. They want to join a sector at lower of the ladder, and want to rise at the top of the ladder. So some sectors provide that opportunity, like banking. Banking is a sector where a person who joins as a clerk can dream to become general manager or MD of that bank. Similarly, there can be sectors where a person joins as clerk, retires as clerk. There are very less opportunities. And that's why this, you can say, seesaw battle is going on in the minds of people. I have seen people, those are working in postal department looking for IBPS clerk. I have seen people, those are working as EPFO, SSA, and want to come to banking now. Earlier they were part of banking. They quit the banking, went to EPFO. Now they want to come back to banking. So this dilemma will remain. Because what is happening is we are making our decision based on social media inputs. Sometimes that may be correct, sometimes that may be incorrect. Once we pass through that phase, then we realize what we have gained, what we have lost. And as you will move in your life, after 10 years you will realize, had I remained in banking, I would have been scale 2, scale 3 by this time. But I have moved to this department, I am still clerk. Then you will realize banking is a good sector. Similarly, it can be true for any other sector. It may be true for insurance, it may be true for income tax department, it may be true for any other department. But my advice is, apply your own brain. First get selection for more than one post. And after getting selection for more than one post, then as per your own liking, as per your own requirements, choose the job. Don't get influenced by the comments of the others. That will land you nowhere. Because throughout my journey and interaction with the candidates like you, I have observed there are many people, they were working in bank. Somebody told them bank is not a good place. They quit. They went to EPFO or they say some other sector. Now they are restless there. They want to come back to banking, but they are not able to crack the exam again, because every year the level is not same. It may be matter of chance you have clicked this year. You may not be able to pass the same examination next year. So don't take any job so lightly. Whatever decision you want to take it with the cool mind and see long-term perspective. Don't take your decision keeping in view comfort of 4-5 years of your life. Your working life in India is usually ranges between 25 years to 30 years. If you are joining very young, you may be working even more than 30 years, maybe even 40 years. If you join at, say, the age of 22, the 38 years are there of active service. So you can't take a decision
keeping in view 3, 4, 5 years of comfort. You must see your ultimate aim for the entire life, and that will make you more wise and you will be able to take the correct decision. God bless you all. We will be posting more such videos which gives you insight. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब जब हम जॉब मार्केट में होते हैं तो हमारे मन में बड़े प्रश्न आते हैं, कौन सी जॉब चुनने, कैसे चुनने, क्या जॉब के अंदर होना चाहिए जो हमें अच्छा लगेगा. ये काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है कि सर मेरा ये सिलेक्शन हो गया, वो हो गया, मैं क्या चुनूं. इसमें मैं कुछ बातें आपके सामने व्यवहारिक रखना चाहता हूं जो रियलिस्टिक है. देखो, कोई भी सेक्टर कंट्री में ऐसा नहीं है जो सबको जॉब दे सकता है. ना बैंकिंग सबको जॉब दे सकता है, ना एसएससी के थ्रू सबको जॉब मिल सकता है, ना यूपीएससी के थ्रू, ना स्टेट जो बॉडीज़ हैं जो रिक्रूटमेंट कर रही है, ना कोऑपरेटिव सेक्टर दे सकता है, और ना ही पब्लिक सेक्टर्स दे सकते हैं. तो कुछ व्यक्ति एक सेक्टर में जाएंगे, कुछ व्यक्ति दूसरे सेक्टर में जाएंगे, कुछ तीसरे में जाएंगे, कुछ चौथे में जाएंगे, कुछ पांचवें में जाएंगे. क्योंकि जो जॉब सीकर्स हैं उनकी संख्या बहुत बहुत अधिक है जितनी जॉब्स अवेलेबल है. ये हमें जो व्यवहारिक चीज़ है इसको पहले अपने दिमाग में डालना है. दूसरी चीज़ ये है कि आपको मन मुताबिक जॉब हिंदुस्तान में नहीं मिलती है. भारत में अधिकांश लोग या तो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं. बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे सेक्टर में जॉब कर रहे हैं जो उनकी मनपसंद है. तो होता क्या है, मान लो मैंने एक पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ना शुरू किया और मैंने इंजीनियरिंग कर ली, या मैंने बीएड कर ली, या मैंने बीडीएस कर लिया, या मैंने कुछ और कर लिया. जैसे ही वो डिग्री ख़त्म करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे फील्ड में कोई जॉब नहीं है, जॉब है तो इतने पैसे नहीं मिल रहे कि मेरा निर्वाह हो सके. वहाँ पर आकर मुझे ये फैसला करना पड़ता है कि कौन से क्षेत्र में जाऊँ जहाँ से मुझे नौकरी मिल जाए और जहाँ से मेरा रोज़ का खर्चा चल जाए. तो इसलिए भारत में हम जॉब को चुन रहे हैं ऐसा है ही नहीं. ये बहुत गलत फहमी है, कई लोग इसको पाल कर रखते हैं और बाद में तंग होते हैं. आप जॉब नहीं चुन रहे हैं. जॉब कौन चुन रहा है? अगर आपने मोर देन 1 एग्ज़ाम्स दिए हैं और आपके पास मोर देन 1 ऑफ़र है जॉब की, तो जो जो ऑफ़र है उनमें से यदि आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको हम कह सकते हैं कि मैं जॉब को चुन रहा हूँ. पर ऑफ़र आने से पहले जॉब को चुन लेना ये बहुत बड़ी गलती है. अब कई लोग ऐसे होंगे, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, उसने कहा जी मेरे एक दोस्त ने बताया वो किसी बैंक में मैनेजर है, आप बैंकिंग में मत आओ, अगर कुछ और नहीं मिलता है तो बैंकिंग में आओ. मेरे भाई, अगर आपको बैंकिंग इतना बुरा लग रहा है और आप मैनेजर बन चुके हैं, आप नौकरी छोड़ दो. नौकरी छोड़कर ये जॉब उस आदमी को दे दो जिसको ज़रूरत है. आपको जॉब भी मिल गई बैंकिंग से, आप उसके शुक्रगुजार भी नहीं हो, और आपको अपने एरिया में जॉब नहीं मिली. मान लो आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में तो आपको जॉब नहीं मिली, बैंकिंग सेक्टर जो कि आपके साथ रिलेटेड नहीं है उसने आपको जॉब दे दिया, आपकी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रहा है, फिर भी आपको अच्छा लग रहा है और लोगों को सलाहें देते फिर रहे हो. इससे क्या हासिल होगा? लीड बाय एग्जाम्पल ना. अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए नौकरी, दूसरे को दीजिए. क्योंकि इस समय इतनी लोगों को नौकरी की ज़रूरत है, बहुत लोग ज़रूरतमंद हैं जो काम करना चाहते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको काम की ज़रूरत नहीं है और वो काम लेके बैठे हुए हैं ज़बरदस्ती. उनको छोड़ देना चाहिए. चलो, ये कुछ भी इसका अर्थ आप निकालें, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सलाह होती है ना, दूसरों को देने के लिए होती है. जब अपने ऊपर आता है तो हम उसी सेक्टर में घुस जाते हैं जिसकी हम बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कहीं और जॉब मिल ही नहीं रही. तो यथार्थ ये है कि हम इसलिए नहीं बैंकिंग में आ रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट लव है, हम बैंकिंग में इसलिए आ रहे हैं ये मेरा सेकंड लव है. और मैंने पुराने वीडियोस में भी ये कहा है कि बहुत लोग बैंकिंग में इसलिए आते हैं कि उनको और कोई सेक्टर गले नहीं लगा रहा, और बैंकिंग उनको गले लगा रहा है तो वो बैंकिंग में आ रहे हैं, मगर फिर भी वो बैंकिंग को अच्छा बुरा कहते हैं. ये उनकी चॉइस है. पर मेरा यहाँ पर जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको यथार्थ के दर्शन कराना है. जो लोग इस डिस्कशन में पड़े रहते हैं कि ये सेक्टर अच्छा है, वो सेक्टर बुरा है, और उनका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये आपका समय व्यर्थ है.
ये तब आपके लिए अच्छा होगा जब आप मोर देन वन जॉब में सेलेक्ट हो जाए, और सेलेक्ट होने के बाद फिर आप उन दोनों जॉब या तीनों जॉब के बारे में क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है उसका एनालिसिस करें, और वो एनालिसिस भी आपकी व्यक्तिगत रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, ना कि दूसरे को क्या अच्छा लग रहा है। किसी को लग सकता है कि मैं पीएन लग गया हूँ, मैं सारी उम्र पीएन रहूँ, उसको अच्छा लग सकता है। किसी को कोई क्लर्क बन गया, सारी उम्र क्लर्क रहे, ये अच्छा लग सकता है। मगर किसी को ये भी होता है कि मैं क्लर्क ज्वाइन करूं और मैं जनरल मैनेजर रिटायर हूं या उच्च पद पे रिटायर हूं। तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है। कुछ सेक्टर्स हैं जहां आप क्लर्क ज्वाइन करेंगे, क्लर्क ही रिटायर हो जाएंगे या एक दो पोस्ट आगे बढ़ पाएंगे। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां आप क्लर्क ज्वाइन करेंगे, हो सकता है आप जनरल मैनेजर रिटायर हो। तो ये तो आपको चूज करना है कि आपका विजन 2-3 साल का कंफर्ट है या जो आपका सर्विस लेंथ है। क्योंकि अगर एक आदमी 22 साल की उम्र में सर्विस में आता है तो लगभग उसको 38 साल नौकरी करनी है। या हमें 38 साल देखने हैं अपने जीवन के, या हमें 2-3 साल देखने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है जब आपको चूज़ करना है। अब मैंने देखा कि काफ़ी लोग बैंकिंग के अंदर हैं, वो बैंकिंग में हो सकता है परेशान हो, क्योंकि हर सेक्टर में सब लोग खुश नहीं रह सकते। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। अभी पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, कुछ लोग ईपीएफओ में चले गए, कुछ एफसीआई में चले गए, कुछ अदर सेक्टर्स में चले गए। अब वो वहाँ रेस्टलेस हैं। अब वो कह रहे हैं कि सर हमसे गलती हो गई, आप बार बार कहते थे बैंकिंग अच्छा है मगर हम मानते नहीं थे, हम लोगों की बहकावे में आ गए, अब हम यहाँ आ गए हैं, अब हम वापस बैंकिंग में आना चाहते हैं मगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। तो ये क्या है, ये हमारे मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। जो हमारे पास होता है कई बार वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और जो नहीं होता है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब वो मिल जाता है और जब हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो हमें लगता है जहां हम पहले थे वहां शायद बेहतर थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं कभी भी यहाँ चैनल पे कंपैरिजन नहीं करता जॉब्स के, क्योंकि उससे कुछ अर्थ नहीं है। हर जॉब अपने आप में अच्छी है और हर जॉब में लिमिटेशंस है। डिस्कशन हमें किस पे करना है कि मेरे पास एक से अधिक ऑप्शंस हैं, मेरे लिए कौन सी ऑप्शन ठीक है, मेरा ध्येय क्या है, मुझे उच्च पद पे जाना है, मुझे छोटे पद पे रहना है, मुझे आज का कंफर्ट देखना है, या मुझे अपने पूरे जीवन की जर्नी का कंफर्ट देखना है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, तो उसके अनुसार फैसला करिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बैंकिंग बेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा इनकम टैक्स बेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा पोस्टल बेस्ट है। बहुत मैंने देखा पोस्टल असिस्टेंट है, वो वहाँ परेशान है, बैंकिंग में आना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग में है, वो पोस्टल में जाना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो रेलवे में है, बैंकिंग में आना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग में है, वो रेलवे में जाना चाहते हैं। तो क्योंकि अधिकांश लोग वर्तमान से दुखी होते हैं, क्योंकि उनको वो मिल चुका होता है, तो उसकी उनको वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है, मगर वो उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो उनको नहीं मिली होती है। इसी को हम मृग तृष्णा भी बोलते हैं। और जीवन भर ये चलता है, ये अंतर्द्वंद चलता है। मगर आपको दूसरों की बातों में आके नहीं फैसला करना चाहिए। आप अपने यार्डस्टिक बनाइए, अपने उद्देश्य बनाइए, और अगर आपके पास एक से अधिक जॉब का अवसर है तो आप उसके अनुसार ही फैसला करिए। मैं कभी नहीं किसी को कहता कि आप ये चूज़ कर लीजिए, वो चूज़ कर लीजिए, बट मेरे को हमेशा जो प्रेफरेंस होती है रैंक की होती है। अगर कोई आदमी क्लरिकल जॉब कर रहा है तो मैं हमेशा उसे कहता हूँ ऑफिसर लेवल जॉब पे उसको जाना चाहिए। पर सबको ये पसंद नहीं होता। कई लोग क्लर्क में कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ लोग हायर बनना चाहते हैं। तो अपने अनुसार फैसला कीजिए। अननेसेसरी कंपैरिजन मत करिए, ये बेकार है वो अच्छा है। ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया में कोई चूज़ नहीं कर सकता है। पहली चीज़ है आपको जॉब मिल जाए। सिर्फ मैं उन नोटिफिकेशंस के लिए आउटराइटली मना करता हूँ जो जॉब है ही नहीं, जैसे अप्रेंटिस, वहाँ मैं मना करता हूँ। जहाँ जॉब है वहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।